So very good morning to all of you, and thanks again for joining in large numbers. I think this is the fourth or the fifth session in the Analyst Stack Sunday webinar series. And we had a session on the introduction of Analyst Stack, जहाँ मैंने Analyst Stack के बारे में बताया था. That time RFC, PFC का वो हो रहा था, REC, PFC का. Then we had a session with Saurabh Kumar ji, wonderful session on how artificial intelligence would be used in all the aspects of financial analysis. You can't leave AI at all. I hope you had watched this session. Then we had a brilliant session on sitting down with fund managers and talking about how to break into the buy side. सभी जन buy side बनना चाहते हैं आजकल. People have become so intelligent, and I'm really happy. Yesterday, I was sitting with the CFA Institute representative, and he was telling me that, sir, nowadays the young crowd, when they are offered a particular job, they will not look at just the company, that it's JP or it's Morgan or whatever. They will look at the role, and they'll be very clear-headed that they want to go into the buy side, they want to become investment managers, okay, or into private equity or into wealth management. So I like the fact that now a lot of fine-tuning is being done. And then last week we had a session on the main part which appeals everyone, which was on hiring. How's the hiring space looking like? Okay. And after the last week session, the panelist Shiladitya, they have been telling me that sir, इतने सारे LinkedIn requests आ रहे हैं, but ज्यादातर LinkedIn request वैसे आ रहे हैं जहाँ people are saying that can you get me a job? It doesn't work that way, मतलब nobody can get you a job. The job will come flocking to you provided you have the depth. Can you actually pitch an investment idea? Can you actually make a presentation? And if you pitch an investment idea, you make a presentation, whatever you do, historically to aaj tak, you have to do it on Excel. You have to do it on PowerPoint. There is no other way. Okay? So even though there is a lot of talk and debate in the masses about फ्यूचर में एक्सेल का क्या काम आएगा, अब तो एआई आ ही गया है, उतना एक्सेल जानने का है कि नहीं है. The fact remains that Excel is the foundational skill. It is the language of finance. Anybody who has achieved any level in finance, youngster, an old guard, whatever, they will tell you that यार Excel के बिना क्या कर पाते हम लोग, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाता. So accordingly, you can call it old school, you can call it whatever, but we do not believe in skipping the basics, skipping the foundation. Accordingly, Analyst Stack program में starting में we have 6 sessions on Excel, and they are very, very deep, and they will be imbibed with the current practices. And I'm so happy that those sessions will be taken by a person. When you hear him, you will find that sir आप तो बोलते हैं तो नींद आ जाता है, ठीक है, but चिन्मय बोलते हैं तो in that case जोश आ जाता है. He's 28, I am 48, 20 years ka gap. So he'll make a world of difference in terms of the energy which he brings to the table. In the past 6 years, he has done marvelously, and that's the proof of it is on social media. I think the participants today are a mix of audiences from his side, those who are his big fan, okay, and the audience obviously from SSCI side. And it's so nice that both the audiences are getting exposed to two different sets of stuff, wherein my audience get to understand, okay, the nuances of Excel and how Excel should be used efficiently and automatively, while Chinmay's audience get to know that after all, Excel is supposed to be used for applications. So the applications part is what will differentiate you from an entry level person to a high level person. The one person that I can remember in my life, okay, and I was really amazed the way he evolved, was Karan Agarwal sir, who's there with us with FRM. When I look at Chinmay, of course, Karan is, I think, 5 or 6 years senior to Chinmay, and I see the evolution, and I wish that Chinmay picks up from his Excel wonderful skills into specialization in some of the other areas, and I know he will do that. Yesterday we had some conversation, short conversation, and I could see the vibes. So please listen to Chinmay with all your heart and soul, because this is a very pressing issue. What's going to happen to Excel? ये VLOOKUP क्या होता है, pivot क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, and is going to just explode with energy into this area.
Welcome, Chinmay. I'm so grateful. And yesterday I came to know, when Chinmay told me that, sir, I studied with you 2017. So I'm not calling you Chinmay ji. ठीक है तो उतना formality मेरे से होगा नहीं. I'm calling you Chinmay, and I'm now used to, students are studying with me. They say that, sir, मेरे पापा भी पढ़े थे आपसे. So I'm more used to all this affair. ठीक है. So welcome to the session. Make it lively. हिंदी, इंग्लिश दोनों में बात करना, because अपने बच्चों को इंग्लिश बेस्ट पसंद है. ओके, चलो, इट्स ओवर टू यू. Sure. थैंक यू. Yeah, sure. So, first of all, thank you so much, sir, for giving this opportunity and also allowing me to join as a faculty in the analyst stack program. And really, like life has become a full circle. मतलब I remember मैंने आपको उस दिन भी कहा था 2017 I was doing like level 1 of the CFA program and I had taken lectures from like SSCI Institute. And बहुत अच्छे से पढ़ा था like the way you teach it was like even today like I spent a lot of time studying my basics and even today that is like very relevant when I go on the job. I take interviews today or I give interviews, whatever the fundamentals we have learned during those period that is like really something which even carries with me today. And even same theme is going to be for today's webinar. Of course, like AI is coming in, a lot of shifts are happening in the industry. But again, like why Excel? Like, why you should learn Excel? I think one of the best reasons to learn Excel is that you develop a mathematical thinking, critical thinking, problem solving approach while working and while learning on Excel. So let's start with a bit of history of Excel, where I would give you the day from which the Excel was started till today, like, what all changes have happened. And then I would walk you through some live practical case studies on how you can understand the gamut of Excel universe. So I'll just share my screen and present my screen. Cool. So first, I would like to talk a bit about like the correct terminologies. Like when we work in finance, also like we should be very peculiar as to which words we use. So whenever people use the word Excel, I don't appreciate it. I think the correct word we should be using is something called as spreadsheets. So Excel क्या हो गया वो proprietary eponym बन गया. मतलब instead of like saying photocopy निकालो, like say Xerox करो, we say escalator. We don't say moving staircase. So similarly, Excel has become like synonymous to spreadsheets. But Excel is not only the spreadsheet tool. There are like other spreadsheet tools also in the market. So एक तो Excel है by Microsoft, then another is Sheets by Google, and China has its own tool for everyone. So spreadsheets is the correct word we should be using, not just Excel, because we see Excel or spreadsheets as a tool, as like finance professionals. Now a bit about history and why this history is even relevant. I'll talk about like a bit in touch with AI. So spreadsheet started in like 1979. So like anyone in India, you go and ask 14th Feb क्या होता है? Everyone would be like Valentine Day होता है हमें पता है. But when I ask them like 17th October क्या होता है? Nobody knows. So actually 17th October is celebrated as a World Spreadsheet Day because like on that day, first day, 17th October 1979, VisiCalc was the first spreadsheet tool which was launched on that day. And hence today we celebrate it as World Spreadsheet Day. So VisiCalc आया था, Microsoft was never there in the picture. Then in 1983, Lotus 123 करके आया था. So when I was in Big Four, I used to interact with a lot of partners. And they used to tell me कि we started with Lotus 123 and today we are using Excel. And then Excel had come first earlier in 1980s, Multiplan नाम से, but it failed. It could not stand a chance against Lotus 123. Then Microsoft reinvented itself, and in 1985 they launched Excel, but first it was launched for Windows. And उसी जमाने में Apple भी public गया था. So you would have an interview of Steve Jobs saying that a lot of people are buying those Mac computers because they want to use these spreadsheets. And then in 1987, Excel for Windows was launched, and since then it is kind of a dominating tool. So this is a bit about history of like spreadsheets, and history repeats itself. जो Lotus 123 start हुआ था, it was one of the employees who was working in VisiCalc who had left that organization and उसने खुद का किया था, and we can see the same today. Like OpenAI came with ChatGPT. Their CEO was also part of OpenAI. He left, he started Anthropic, and today he has launched Claude. So history repeats itself, like so that's why I always feel that whenever you study a subject, you should always go into the history of the subject because it teaches you a lot of things. So that's a brief about history spreadsheets. So correct word would be using is spreadsheets, and this is the 40 years history of Excel. Now, why you should learn Excel, right? So what I would be doing is that I would be focusing on the gamut of Excel universe, like what exists in Excel universe. बहुत बार हम लोग को वही पता नहीं होता है. So I have divided history Excel into 10 categories.
So as you can see, I have presented on the screen. So there is something which I call it as, basic and advanced Excel, which I think most of us know. अगर थोड़े फ्रेशर से तो इतना बैकग्राउंड नहीं होगा, but functions like sumifs, countifs, VLOOKUP, applying pivot tables, this I consider as kind of basics of Excel. Conditional formatting, page special dialog box, etc. And then when you come to advanced Excel functions, people who have been working in industry, so they know functions like index and match. They have worked on functions like offset, XLOOKUP. So these come under kind of an advanced Excel category. But now what has happened is that Excel is bringing in a lot of updates. So in 2019, Excel brought an update which was called as the concept of dynamic arrays. So I will tell you about the concept of dynamic arrays, how it has changed the way we look at Excel with a live practical example. So let me just pull out my Excel screen now. And then I would talk about the concept of dynamic arrays in Excel. So how has Excel evolved and changed itself over the course of last years? So now I'll take a very simple example, which we tend to do is that we tend to give a percentage analysis, how much. So this is again, I have taken the data of India, GDP per sector, and how is the percentage contribution of each sector. Now, traditionally, what we have been doing is that we have been doing cell B8 divided by the total, and then I would freeze my total, and then I would compute what is the percentage contribution, and then I would drag and drop this formula. So this is the way, traditionally we have been working on Excel, by applying dollar signs. But now with the advent of dynamic arrays, this technique is no longer relevant. How I would solve this particular problem statement is that I would take an array, like the entire array. So instead of taking a cell, I would take an entire array and then I would divide it by the total. And moment I do this, you can see my data spills on itself. So I'm not using the concept of dollar signs in Excel. What I am doing is that I am using the concept of dynamic arrays in Excel. So earlier हम लोग Excel में काम करते थे, तो we used to think कि cell based reference है. One cell will be get multiplied by another cell, but now that has changed. Like even in this particular example, we have let's say parts of computer, the prices are in USD, and we want to convert into respective currencies. So traditionally हम लोग कैसे करते थे? Traditionally I would do this cell into this particular cell, and then काफी मेहनत लगाते थे कि डॉलर साइन कहाँ पे लगेगा. तो we would apply a dollar sign before C, then we would apply a dollar sign before row 20, and then I would copy paste this across the array. But now this approach is no longer relevant, and it's no longer the the most efficient approach. How I can solve it is I can just simply do it array 1 into array 2. So moment I do this, you can see my entire data spills on itself and I have got my output. And this is how you can solve some problems in Excel. तो इस concept को हम लोग क्या कहते हैं? Dynamic arrays in Excel कहते हैं. And this is the new computation engine, which was introduced by Microsoft in 2020. So अभी मैं जब काम करता हूँ, I was working at Big Four and I've shifted to another consulting firm. So I was specifically hired, to build this dynamic array based models, because these models are extremely scalable. They automatically expand on its own. As you can see, array logic है. So जब मेरा नया data आएगा quarterly या फिर next year, या फिर even client has let's say 150 portfolio companies, but tomorrow he goes to 200 portfolio companies, then my model will automatically update on its own. So this is the beauty of the concept of dynamic arrays in Excel. So this is something new which has been introduced by Excel in the year 2020. And whenever I teach, I'll be part of analyst stack program also. So I would cover dynamic arrays in depth. And एकदम अच्छे से see many a times हम लोग स्कूल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, correct? So if you remember that we had learned the dot product method of matrix multiplication. So dynamic arrays is nothing but matrix multiplication. So you can see there is a function in Excel which is called as MMULT. So I can use this function also. I would be using the school concepts of matrices. जो हम लोग ने matrices स्कूल में पढ़ा था. I would just choose two arrays. And you can see I still get the output. So I'm using a function called as MMULT, which is a matrix function, which we all have done in school days. I'll just show you. अगर आपको थोड़ा आपका memory brush up करवाना है, so I'll just show you that dot product of two vectors. This was something which we learned in our school and college days, how you can multiply one matrix by another, the dot product formula. That is even relevant today, while I work on Excel. So mathematics is always there. It's just that we lack the vision, to see it. It's behind the curtains.
So again, I'll come back to the topic. So first, like I was discussing the gamut of Excel universe. So I talked, Chinmay, uh, yeah, these guys, all my students, when they compute so much of variance covariance matrix and then the variance of portfolio or the value at risk, that's all a output of a mult function of Excel. okay, yeah, that's really great to know. Yeah. So yeah, so that's the concept of like dynamic arrays in Excel. So now I would also talk about the new functions in Excel, like which new functions which have been introduced into the Excel universe. Let me take an example of something called as lambda based function. So even I spent a lot of time coding lambdas at my work, and how lambdas have changed the way we look at financial modeling and we look at Excel. So what has happened? I'll just walk you through the first problem statement as to what used to happen earlier and how lambdas would change the way we look at financial models. So I've taken a very simple example where I just have list of dates and then I need to plot or remove the fiscal year from it. So as you know that in India we don't follow the traditional calendar year. Like the traditional calendar year is Jan to December, but India we don't follow that. In India we follow something called as April to March. Correct. So April to March is the fiscal year cycle which is followed in India. Now, how would I get the fiscal year cycle in India? Like, let's say if I have given a bunch of dates and I need to plot out the fiscal year in Indian context. So how would I do it? So what I can do is I can write a simple logical thinking formula. And again, see, like when we learn on Excel, even today, when I work on Excel, a lot of my codes, a lot of my formulas are kind of written by AI, like either Claude or ChatGPT or Copilot. But what is critical when you use those AI tools is what is the logical thinking you have and what is the prompt you give to an Excel tool so that the quality of output is also dependent on the quality of prompt you give. So whenever you encounter such problems, I always try to focus on logical thinking and critical thinking skills. So now in this particular example, simple if statement can solve this particular problem statement. So how is how we define a fiscal year? So see, it's fairly simple that if it's a Jan, Feb, and March, like if it's these 3 months, then my fiscal year is equal to my calendar year, correct? So let's say if I'm standing in like 28 Feb 2024, then my fiscal year and calendar year are same, correct? And if it's not these 3 months, like it's either anything from April to December. If it's from April to December, then my fiscal year becomes my calendar year plus one, correct? So this is a simple statement, logical prompt which we have to develop on ourselves, and then you can maybe tell Copilot or Claude or ChatGPT is that I want to code a formula for fiscal year. This is my logic. Can you help me code it? And then it would give you some particular answer. So here, how would I write it? I would use a simple if formula, and I have already written it. So this is more of a demonstrative session. So I would just show you the formula rather than explaining it because we just have 90 minutes and I have to cover a lot of ground today. So this is a simple if formula which I have written, which says that if the month is greater than 3, then my year plus 1 becomes my fiscal year. Otherwise, it's just the calendar year. Correct? So this is a simple if formula which I have written. Now, here comes the part of lambda. So now how I can use lambda is that I need not write this logic again and again. Like let's say I'm a senior analyst working at my company and every new month I have to build a model. Or like let's say for multiple clients I have to build models. Now I cannot afford to waste my time writing this logic again and again. And let's say if I want to delegate it to some junior analyst, then I don't have time and energy to explain him this formula. And there is a good possibility that if I give him freedom, तो वो mistakes भी कर सकता है. So what we can do in Excel now is that we can create our own user-defined functions. So with the help of lambdas, I can create my own function in Excel. So what I can do here is that I will copy this function and I will put it inside a lambda function. And then we can see the benefit of how lambda function kind of helps us automate our workflows in Excel. So I'm putting this under my lambda function. And as instead of like giving a reference to a cell, I would give it a reference to a variable. So I can type any variable. बचपन से हम लोग x ही लेते आ रहे हैं, like whenever we study algebra.
So x would be kind of my variable which would be for this kind of lambda function. So I would just give it a closing bracket. Of course, it will give me a calc error now. So I will copy this lambda. I will go to my Excel's name manager. So you can go to formulas. You can go to name manager in Excel. यहाँ पे होता है. And then I can give it my own function name. Correct. So like this webinar is like organized by Sanjay sir. तो Sanjay FY नाम देते हैं इस function को. And I will post my lambda here. Correct. अभी मेरे एक्सेल में संजय एफ वाई करके एक फंक्शन क्रिएट हो गया है. देखो संजय एफ वाई एक फंक्शन नहीं था, वो फंक्शन क्रिएट हुआ है इन माय एक्सेल एंड आई जस्ट पॉइंटेड एट द डेट्स. And you can see it is giving me the fiscal years. So now what has happened, ये जो बड़ा लॉजिक है जो if का मंथ ईयर का मैंने लिखा वो मुझे एक ही बार लिखना है लाइफ टाइम में, वो लॉजिक का मैं लैम्बडा बना दूंगा. एंड अभी देखो ये संजय एफ आई फंक्शन तो था ही नहीं, आपके एक्सेल में ट्राई करो नहीं होगा. करेक्ट. बट स्टिल इट्स देयर इन माई फंक्शन बिकॉज मैंने आपके सामने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा फंक्शन. सो लैम्बडा से क्या होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. आप आपके खुद फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू कैन काइंड ऑफ ऑटोमेट योर वर्कफ्लोज वेरी वेल. मैं और एक एग्जांपल इसमें लेना चाहूंगा. I'll just show you one more example. So most of you might be from CA CFA background. And बहुत बार ऐसे होता है कि like we learn a lot of concepts like when we are doing these programs. But the best way आपको अगर maximum ROI निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, आप CFA के एग्जाम्पल्स लो एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन एक्सेल. तो आप CFA भी सीखोगे एंड आप एक्सेल भी सीखोगे एंड आप लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखोगे. तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है. आई थिंक एवरी CFA, इनफैक्ट पे बैक पीरियड इज नो लॉन्गर रेलेवेंट ऑल्सो. हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करते हैं बट आई डोंट वांट टू टेक द एक्सेल कॉम्प्लेक्सिटी टू अ नेक्स्ट लेवल. तो सिंपल पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है. सो दीज आर लाइक माई एनुअल कैश फ्लोज जो प्रोजेक्ट में मुझे मिल रहे हैं. एंड दिस इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि मेरा 2 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है. Now I want to solve a payback period in formula in Excel. Now Excel में there is no function like payback period. करेक्ट, वो है ही नहीं एक्सेल में विच कैन सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स पेबैक पीरियड प्रॉब्लम मैकेनिज्म. सो आप ये कैसे सॉल्व करोगे? तो एज यू रिमेंबर व्हेन वी सॉल्व्ड इट विद आवर टेक्सास BA2 इंस्ट्रूमेंट्स कैलकुलेटर्स आल्सो, फर्स्ट इज आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लेना होगा. सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ सम इफ्स टू गेट द क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज. तो सम इफ्स एक फंक्शन है जिससे मैंने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बिल्ड किए हैं. अगेन आई वोंट गो इनटू डिटेल explaining you this function in detail because this is more of a demonstrative session, but you can see I've built my cumulative function cash flows in Excel. So देखो 70, 60 and 55 1,85,000 होता है, तो यहाँ पे वो cumulative cash flow 1,85,000 आ रहा है. So I have got my cash flows, I have got my cumulative cash flows. अभी मुझे payback period calculate करना है. Now if you solve it on pen and paper or if you do it on calculator, तो आप one time करोगे, but then if the value changes or if the assumption changes, देन वो आपको फिर से फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 10 करना पड़ेगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन एजुकेशन एग्जाम्स में वही होता है, उसके स्टेप वाइज के 15-20 मार्क्स देते हैं. बट दैट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्प्रेडशीट्स टुडे. सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव टेकन दिस एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, एज अ CA CFA स्टूडेंट, एंड वही मैं अभी ट्राई करने का सॉल्व करूंगा. सो ये मैंने कैसे सॉल्व किया है, सेम लॉजिक है. सी व्हेन वी सॉल्व पे बैक पीरियड, it is nothing but that same formula which I have given, like years before the full recovery plus unrecovered cost at the start of year and cash flow during the next year. So although it seems like it's very simple problem statement to solve, but इसको जब आप automate करोगे models में, where it will automatically give answers in all possible scenarios, in those scenarios it will struggle. So what I've done is that I've used Excel's new XLOOKUP function. So you can see I have used XLOOKUP function to get my years before full recovery. So I get my 3 here. Then I've used my XLOOKUP function to calculate the unrecovered cost during the start of the project. Then I have used my XLOOKUP function to kind of give me the cash flow for the next year. And then I have just done the basic algebra. And you can see I've got my payback period calculated. So this is how आपको भी करना है, पढ़ाई करनी है. And see, this is like a fully automated model. Like even if I change some assumptions, it will be able to handle my particular question. So you can see here the formula which I have finally written, it is still giving me payback period as 0.7 because first year में recovery हो रहा है. Correct. If I give it a very big number, so you can see my payback period answer is also giving me an no recovery concept. So यही होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में. आप ऐसा फॉर्मूला लिखो which works in all possible business scenarios and वो फॉर्मूला ऑटोमेटेड फ्लो में चले.
So this is how you should be learning. Like if you are a CA, CFA student, ACCA student, so take examples from your textbooks and learn. So इस particular example को मुझे solve करने में क्या लगा? एक तो मुझे finance का concept लगा कि payback period क्या होता है. And second, I used a bunch of lookups. Now, I know that I'm not explaining this lookups to you. And again, that's not the purpose of this particular session. The purpose is to show you the power of Excel and relate it to what you learn in theory with Excel. So this is a basic XLOOKUP which I had written, but it also had some limitations. So ye maine, again, I have written this, like this is the long formula which I have written where I've used a let function and an XLOOKUP function. And if you spend some time with me, if you attend my session, then you would be able to write your formulas on your own. So this is how you can use the concept of modern functions in Excel also to solve your problem statements. So this is just one example. So now again I'll come back to the gamut of Excel universe. So अभी हम लोग ने dynamic arrays क्या होता है सीखा. We learned the concept of lambda function, and I also showed you how XLOOKUP has solved my problem statement. So now Excel भी कैसे evolve होता है. See, everyone who using Excel he knows VLOOKUP, but VLOOKUP launched हुआ था 1985 में जब spreadsheets first आए थे, and XLOOKUP launch हुआ था 2019 में. So why do you want to use a function like VLOOKUP, which is no longer relevant? You can use the functions like XLOOKUP, which Microsoft has recently launched. So Excel हमेशा update होते रहता है. Like there are a lot of functions which are there in Excel, which I'll show you. मतलब many a times we know कि यार pivot tables चलाते हैं, like pivot, we will use pivot. But now Excel में pivot by function है. See, this is a pivot by function which is there in Excel universe, which Microsoft has launched. तो pivot tables जो ट्रेडिशनल हम लोग बनाते थे, इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. पिवट बाय फंक्शन है. देयर इज अ ग्रुप बाय फंक्शन. लाइक लॉट ऑफ काफी लोग होंगे जो सीक्वल बैकग्राउंड से होंगे, पाइथन सीखे होंगे. तो ग्रुप बाय इज अ फीचर विच इज वेरी मच देयर इन द सीक्वल वर्ल्ड. दैट इज ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड इनटू एक्सेल. मेनी ऑफ यू माइट हैव लर्न पाइथन, करेक्ट. सो पाइथन में एक फंक्शन होता है, मैप फंक्शन होता है. नाउ मैप फंक्शन क्या करता है? मैप फंक्शन इज हेल्पिंग यू गिव फॉर लूप्स इन पाइथन. एक अगर आपको लूपिंग करना है, फॉर लूप लगाना है, so you do it through map function in Python, but that same map function is also available in Excel. So Excel has introduced a plethora of new functions. Like Excel has also introduced a function called as sequence. Correct? So अभी sequence क्या function है? हम serial numbering डालते हैं, correct? So let's say sequence of 10. So you can see I've got 10 sequence generated on my own. And again, this thin blue line जो आप देख रहे हो, this is a dynamic array function. Now आपको लगे क्या कि यार ये चिन्मय sequence function क्या है? मतलब serial number ही डालना है, इसमें क्या क्या हो सकता है? I'll just show you one example, like how nerdy people can get. So sequence function manipular. So he is my friend, like Israel से है उन्होंने, and उन्होंने एक किताब लिख दी है sequence function से. Like he calls it as like mastering sequence function. And let's see the pages of this book. So I'm going here, and it is a 246 page book on just one function in Excel. So although हम लोग को लगता है कि यार ये सीक्वेंस फंक्शन क्या ही है इसमें, लाइक मतलब सिर्फ रोज एंड कॉलम्स ही तो जनरेट कर रहे हैं, बट दैट इज द एंटायर बेस लाइक ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटेशन इंजन डायनेमिक अरेज. एंड दिस गाय from Israel has written a 250 page book on just one single function. Correct? So a lot of complexities can be built into Excel. It's just that we need to have the vision and the capabilities to do it. So that is about modern functions in Excel. Now filter करके एक function हो गया. So filter is no longer जो हम लोग filter करते थे data, it's no longer needed. Filter एक function के form में introduce हो गया है. अगर आपको ये सारी functions के बारे में जानना है तो there is one very simple trick. आप कोई भी function का नाम डालो, press Ctrl A for apple, then एक function argument dialog box आएगा. So what you have to do is type the function name, hit a tab key, so पूरा function populate हो जाएगा. Press Ctrl A for apple, and then go help on this function. So now if I click on help on this function, see where I am taken. I am taken on the support.microsoft.com. So मैंने आपको कहा था Excel is a product by Microsoft. Microsoft $2 trillion की कंपनी है, and ये प्रोडक्ट बेच के they are earning billions of dollars in revenue. So उनका support page is going to be the most authentic and the most relevant page for you to learn anything about Excel. So जब इससे हम लोग को filter function के बारे में पढ़ना है, so see they have given a video also. They have given you a case also. They have given you examples also to practice. तो आप किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हो. जैसे मैंने आपको कहा कि पिवट बाय फंक्शन लॉन्च हो गया. सो टाइप इज इक्वल टू पिवट बाय, कंट्रोल ए, क्लिक हेल्प ऑन दिस फंक्शन, एंड देन यू कैन लर्न मोर अबाउट पिवट बाय फंक्शन ऑन लाइक माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट पेज. सो इन अ वे मैं थोड़ा कैनिबलाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई मेक अ लिविंग आउट ऑफ बाय टीचिंग पीपल एक्सेल, बट आई एम गिविंग यू द लिंक टू द सपोर्ट पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जहां से आप खुद सीख सकते हो.
So in a way, it's kind of, cannibalizing my revenue. But I believe that as a trainer, I should give you the best possible resources. So this is something where from you can learn, from the horse's mouth, which is Microsoft, from their support page. So this is how you can, start going to support page and start learning from there. So just to summarize, we understood spreadsheets, तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स है. विजिकैल्क फर्स्ट आया था 17 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्प्रेडशीट डे है. And then we learned about dynamic arrays, we learned about lambdas, and we learned about some new functions which have been launched in Excel, जैसे lambda हो गया, like pivot by हो गया, filter हो गया, sequence हो गया. sequence का मैंने आपको बुक पे दिखा दिया. Now there is more in Excel universe, and there is something called as Power Query in Excel and Power Pivot in Excel. तो वो मैं walk through करूंगा. But before that, Sanjay sir, any thoughts on recent updates which have happened in Excel? आपने भी Excel use किया होगा, when you first started your job or maybe started learning finance. How are you feeling about the newer updates? See, I recently came to know of a particular Indian origin guy by the name of Tarun. I don't remember the full name. And they have floated a company by the name of Index. Okay. Okay. Although नाम से ऐसा लग रहा है कि Index मतलब End Excel. But if you go inside the philosophy of the company, the philosophy is that Excel is here to stay. It's going nowhere. Okay. But AI agents are going to be incorporated in Excel in such a way that human life becomes beautiful, which means that people pay attention to the judgment and decision making aspect which are to be used in real life rather than mechanical aspects. So that is the future of Excel, the way I see it. But however, you can only understand the future only if you know the basics. And it's all a question of efficiency and optimization. So the n number of tools that you are hinting over here, of course, you can't teach anything over here. We are time constrained. बट आई एम श्योर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अटेंड कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यार 1 2 3 4 भी जब लिखते हैं ना ये लोग, तो कई बार ये लोग परेशान हो जाते हैं 1 2 3 4 के बाद 5 6 कैसे आएगा. एंड so but everybody knows that way. Of course, at our level, I'm telling you, when we make decisions and all that, right now, we never actually get down to any tools at all. But there are people doing it, AI agents doing it. So I have a hands-off approach right now. Even in my classes, there is so much of portfolio management and optimum portfolio and frontier on which we do simulation also. But obviously, there's somebody else doing it. Now, the good thing is that AI agents will get integrated. But if a youngster is thinking that, oh, अब तो AI agents आ जाएंगे, तो मेरे को Excel जानना ही नहीं है, I think this would be the biggest foolish understanding. You have to know it and you should know it, and then you should optimize with the help of AI agents so that your focus shall be on the application rather than on the aspects. Doing Absolutely, fine, sir. don't worry. Perfect, since it's not a Zoom meeting. Zoom meeting होती तो लोग interaction में बोल पाते. Since a Zoom Yeah. webinar, because of the constraint of time, don't need to worry. मेरे students thoroughly enjoy कर रहे होंगे. Okay. Sure, sir. Good to know. And sir, just carrying upon things. So now, whatever I'm going to show you, like I'm going to show Power Query, which is based on M language, Power Pivot, and then I'll talk about VBA macros and programming within Excel. And trust me, ये सारी चीजें मुझे पता है, but मैंने ये जब examples build किए, तब I didn't even write a single line of code. All my codes were generated through Claude, and I'll show you those examples, like how things are happening, and everything was done by AI. So that is the beauty, but आई कुड यूज AI बिकॉज आई नो कि एक्सेल में कौन सा फीचर है जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेगा. अगर आपको पता ही नहीं कि ये पावर क्वेरी का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मुझे ETL फीचर्स यूज करने हैं, मुझे कंसोलिडेशन करना है, तो इवन इफ यू गिव मी लाइक एन AI टूल, इट्स नॉट हेल्पफुल. लाइक मैं एक अच्छा एग्जांपल दे रहा था, लाइक लेट्स से मैं कोई अकाउंट्स का एग्जाम दे रहा हूँ एंड मुझे कैलकुलेटर नहीं दिया. So would I be able to pass that exam? Probably no. Like I won't be able to pass that exam because I don't have calculator with me. But let's say मैंने एक 10th standard के बच्चे को calculator दे दिया और उसको बोला जो accounts का exam लिख के आ, तो will he pass the exam? Even he won't pass the exam because उसके पास calculator है but he doesn't have the concept. So you have to bring the mix and match of skill sets, knowledge, business intuitions, business skills, along with some bit of technical knowledge. And as sir rightly said, a lot of this technical knowledge, like writing code, writing formulas, was kind of a task few years ago, but now AI agents are doing it well. But again, to get the desired output, the correct output from AI agents, you need to yourself be equipped with basics and you need to understand कि आप क्या solve कर रहे हैं.
So now let's understand one more problem statements which a lot of Excel users face, which is called as the concept of ETL, extract, transform and load data. So I'll show you one example जो मैंने specifically इस webinar के लिए build किया था. So now let's say this is the raw data file which I have. So I'll just show you and walk you through the raw data files. So बहुत बार ऐसे होता है कि आप कभी भी data extract करते हो तब it happens that you don't get full year का data. So as you can see यहाँ पे मैंने Nifty 50 का data लिया है. And I was trying to do some historical analysis on Nifty 50. I was doing the concept of rolling returns. I was just trying to see ki whether there is any period in Nifty where I have hold for more than 7 years. And मेरा लॉस हुआ है क्या, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कि 7 साल होल्ड करूंगा तो प्रॉफिट होना ही चाहिए. तो इसीलिए मैं क्या कर रहा था, निफ्टी का डेटा ले रहा था. सो एज यू कैन सी मैंने 2012 का पूरा डेटा इस फाइल में लिया है. बट देयर वाज वन लिमिटेशन इज दैट कि जब आप वेबसाइट पे जाते हो तब it does not give you full data, and this such limitations are going to stay because websites also they want to protect their data and lot of compliances issue. So as you can see यहाँ पे in my screen I have year wise files like 2016, 2017, 18, 19, 20. मुझे एक साथ इकट्ठा एनालिसिस नहीं मिला कि मैं 2012 से लेकर 2020 तक का डेटा एक ही बार में पुल कर पाऊँ. You can do that if you have access to databases like Bloomberg's and all, but all those come at a cost. So let's say if you're working in a boutique company, वहाँ पे नहीं है, या फिर there are a lot of databases which are not covered like in this databases, आपको manually website से डालना पड़ेगा. So मैंने एक एक website file download करी and I got this like 8 years का data. नाउ द चैलेंज इज कि मैं एक फाइल खोल के कॉपी पेस्ट करूँ, फिर दूसरी फाइल खोल के कॉपी पेस्ट करूँ, तीसरी फाइल खोल के कॉपी पेस्ट करूँ. इसमें तो मिस्टेक हो सकती है बिकॉज इट्स अ मैनुअल अप्रोच. एंड सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट इसमें ऑटोमेशन नहीं है. मतलब ऐसे थोड़ी है कि मेरा 2020 तक ही डेटा रुक जाएगा. आई विल हैव 2021, 2022, मेरा डेटा बढ़ते ही जाएगा. समटाइम्स आई मे वांट टू डिलीट a particular data also. So how do I solve this particular problem statement where I have to consolidate a lot of Excel files? So how I have solved this particular problem statement. So यहाँ पे देखो ये मैंने कंबाइंड निफ्टी डेटा का एक फाइल बनाया है एंड आई विल शो यू इसमें मेरा पूरा डेटा कैसे कंबाइन हो गया. तो एज यू कैन सी 2012 से लेके 2020 तक मेरा सारा डेटा एक ही फाइल में कंबाइन हो गया है. एंड हाउ डू आई डू दिस करेक्ट. सो इसमें मैंने एक्सेल का पावर क्वेरी फीचर लॉन्च किया है, मतलब पावर क्वेरी फीचर यूज किया है. तो इफ यू गो टू डेटा टैब, सो डेटा टैब में दिस यहाँ पे देखो आप क्वेरीज एंड कनेक्शंस लिखा होगा. दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्वेरीज इन एक्सेल. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक लेट्स से इफ आई लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, so you can see you can type some codes here which are not Excel formulas. This is not VBA macros. This is M language. Correct. So M code में आप ये सारी चीजें आप लिख सकते हो and you can do the consolidation of the work. So मैं आपको मेरा M code दिखाता हूँ which I had to write specifically for this particular case of consolidating the data. And of course ये मैंने खुद ने नहीं लिखा है. This again code was written with the help of AI tools. I'll just show you. I go to view and I go to advanced editor. And you can see यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है. करेक्ट. So this code is nothing but an M code. करेक्ट. So मैं आपको exactly मेरा जो केस था कंसोलिडेशन का उसका मैं आपको queries and connections दिखाता हूँ. So I go here and I type on edit. Correct. So I type here edit and moment I go to Power Query Editor. Now this is not Excel. This is Power Query in Excel. Correct. It's an ETL tool, extract, transform and load data. So अगर आपको web scraping करना हो, let's say you're working with 10 different people. Now I was working on a project where we were assigning credit ratings to companies, and 200 portfolio companies थी. So 5-6 analysts are doing that particular job. Now 5-6 analysts are doing their job, but at the end when I have to send it to client, I have to consolidate everything and send it to client. So when I was working on that project, so analysts were working on their individual files and I had to consolidate those 6 files into one single file, make a Power BI dashboard and send it to the client. तो ये मैंने कैसे किया था, ये मैंने पावर क्वेरी से किया था. जो कंसोलिडेशन था वो मैंने पावर क्वेरी से किया था. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा है, दिस इज एन M language code which I have written, which consolidates the data across multiple files. And the beauty is it's fully dynamic. मतलब I'll show you how beautiful it is. देखो ये 2012 से ये डेटा आ रहा है and 2020 तक का डेटा आ रहा है. So now let me see if I have new year का डेटा. So this is my new data and यहाँ पे 2021 की फाइल आ गई है. करेक्ट. So I am copying this
एंड जो मेरा सोर्स डेटा है जहां पे मैंने लिखा था ये रॉ डेटाज में मैंने सारे फोल्डर्स डाले थे, सो आई एम पेस्टिंग इट हियर। 2021 का डेटा यहाँ पे आ गया है। करेक्ट। नाउ अगेन लेट्स गो टू माय ओरिजिनल फाइल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 का डेटा नहीं। करेक्ट, दिस इज नॉट देयर, वो न्यू फाइल आ गई है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल, or I can just go to right click, I can go on query, and I can say just refresh my query. Correct, I am just going to refresh, and you can see moment I refresh, uh, just a minute, I think मैंने वो फाइल खोल रखी है तो so what has happened is now currently in my particular query, the query में थोड़ा bug आ गया है, like when I was editing it, I think this bug has happened. But what it happens is that what you can do is you can put new Excel folder files into the folder, and then it can still get the job done. So इसमें क्या हुआ था जब when I was editing this, so maybe मेरा जो path हो गया है, the path which on the basis of which we were काइंड ऑफ सॉल्विंग, जब मैंने फोल्डर्स मूव कर दिए होंगे तब शायद मेरा जो पाथ है दैट पाथ मस्ट हैव चेंज्ड, सो बिकॉज ऑफ विच या आई थिंक दिस इज द पाथ जो मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो लेट मी सी इफ आई कैन पुट अ न्यू पाथ हियर। एंड अच्छा हो गया दिस काइंड ऑफ एरर हैपेंड, so that we kind of learn from those particular errors. So I'm just copying this, and let's see. I don't know if it's going to work or not. I'm just making an experiment. So I hope it works. But otherwise, we just have to fix, ऐसे ही होता है, like whenever you work on, some any tool or anything, you will face a lot of errors. Then you have to kind of debug the error. And then you are able to, kind of able to solve those particular problem statements. I think, let me see, अगर refresh हो रहा है तो. Uh, cool. I think there is some issue with my code which I'll have to type, but just take a gist of it. Power Query में क्या होता है? You can consolidate multiple files into one single file. And then अगर if you add some new files, then automatically that data also gets updated on its own. So this is the concept of Power Query in Excel. I could have fixed it. It's just that काफी time लग जाएगा. Our agenda is not to just learn Power Query, but also other topics in Excel. But remember, there is something called as Power Query ETL tool, which helps you in data consolidation. Now, I'll close this particular file. Maybe in case we have time at the end, we can come back to this problem statement again. Then there is one more concept in Excel, which is the concept of Power Pivot, which is DAX in Excel. So this is not pivot tables. This is Power Pivot in Excel. So इसमें आप DAX लिख सकते हो, which is called as data analysis queries. So again, I've built an example. So let me show you that particular file. So I'll open the DAX file now, which I am presenting. And again, ये जो मैंने सारे DAX के queries लिखे थे, all these queries were also written with the help of AI. So I have put prompts in ChatGPT, put prompts in Claude, and then I have able to generate this particular data. So अभी I'll just show you कि इसमें क्या हो रहा है. So इसमें मेरा date wise data है. So as you can see, कोई भी business होगा उसका date wise data होगा, product categories होगी, and this would be the sales. Correct. So अभी इसमें what I can do is I can analyze this data. Correct. So I have like dates, I have different product categories, and I have daily sales amounts. Now what usually we do is that हम लोग इसका pivot table लगाते हैं. Correct. And that is also like a fair way. Like what most of us do is like, let's say, insert pivot table from table and array. And then we can kind of apply a pivot table function, and we can solve this particular problem statement. So from table and range ले सकते हैं new worksheet में, and then we can do basic analysis, like अभी मतलब product wise कितना sales हो रहा है, all those basic things can be built. So like let's say मैं product category डालता हूँ. So let's say मैं यहाँ पे product category डालता हूँ, and then I put the sales amounts, then I would be able to kind of make basic pivot tables analysis. But now we don't want to learn the basics of pivot table. What I have done is that I have done this on Power Pivot and DAX. तो इसमें देखो अभी मैं Excel में Power Pivot में जाता हूँ, and I go on manage. So you can see मैंने यहाँ पे queries generate कर रखी है. So what I have done
इज दैट यहाँ पे मैंने एक DAX यूज करके आई हैव बिल्ड दिस एग्जांपल. सो आई विल जस्ट गो यू एंड आई विल शो यू इन द डायग्राम व्यू. सो आई हैव लोडेड जो डेटा मेरे पास था, एक्सेल टेबल मेरे पास आया, आई हैव लोडेड दैट इनटू पावर पिवट. मैंने एक कैलेंडर टेबल क्रिएट किया है एंड उन दोनों में मैंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है. यू कैन सी दिस इज द रिलेशनशिप विच आई हैव क्रिएटेड, विच इज अ वेरी बेसिक रिलेशनशिप. बट आप ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स यूज कर सकते हो. मीनिंग हम लोग एक्स लुकअप यूज करते हैं, लाइक टू मर्ज टू टेबल्स. बट पावर पिवट में आपको एक्स लुकअप यूज करने की जरूरत नहीं है. You can just create a relationship between 10 tables and then you can analyze all the 10 tables together. So you'll face this problem real life में कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा आएगा and you would not be able to consolidate it. So what you can do is you can loop them in Power Pivot DAX and create connectors between those tables. So आप इकट्ठा पूरा उसको एनालाइज कर पाओगे. तो ये मैंने रिलेशनशिप क्रिएट की है. एंड देन आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ डैक्स मेजर्स. सो मैं आपको इतने दिन से मैं फॉर्मूलाज बता रहा था, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्स लुकअप, आई वाज टॉकिंग अबाउट फिल्टर फंक्शन. सो वो मैंने फॉर्मूलाज एक्सेल के लैंग्वेज में लिखी थी. बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, वहाँ पे मैंने मेजर्स लिखे हैं. आई विल शो यू सम ऑफ द मेजर्स और फॉर्मूलाज विच आई हैव रिटन. सो दिस आर द फॉर्मूलाज विच आई हैव रिटन, करेक्ट. नाउ दीज, ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखी है, दीज फॉर्मूलाज आर नॉट लाइक एक्सेल फॉर्मूलाज, दीज आर डैक्स फॉर्मूलाज. आप ये देख सकते हो जो कैलकुलेट मैंने लिखा है. Let's try to edit this. Let me just change. Yeah. So now I go to keep measures, and let's say I say manage measures. अभी मैंने यहाँ पे एक analysis किया है, which is called as same period last year का analysis. So let me edit it. So ये जो मैंने formula लिखा है, this formula, this is not Excel formula, this is not VBA macros, this is not Power Query, this is DAX. So मैंने DAX लिखा है in Excel, and this same DAX you will write when you work on Power BI dashboards also. So what I have done is that same period last year, like मेरा business चल रहा है, तो same period last year मेरे कैसे हुआ था, like maybe like when Sanjay sir is also analyzing the SSCI का data, he must be also thinking कि like how my how 2025 was a year versus 2024. So he might be seeing quarterly also data, because it can happen कि जब CA final शायद I don't know 2 बार होता है, 3 बार होता है. Every business has a cyclical trend. So he might want to see quarterly data. He might to see same year last year कैसा था. He might want to see कि year to date मेरे numbers कैसे है, so that I can give targets to my juniors who are working under them. लेकिन usually organizations में targets होते हैं. So all those analysis can be done. Like there are multiple products. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक slicer भी introduce किया है. So what this data does, this entire power pivot which I've built. So I've used those relationships and I've used those DAX to create this entire the concept of power pivot is that I can analyze the data better. So अभी देखो, अभी now what I am doing is that I have selected all the product categories. So अभी मैंने सिर्फ books choose किए. तो this data is just for books, correct? So it shows me total sales कि मेरे each month में कितना total sales हुआ था, and it also shows me the rolling 12 months का sales, correct? So February में मेरा 20,435 sales हुआ है. बट इफ आई वांट टू नो कि मेरा लास्ट 12 मंथ्स में कितना हुआ है, तो मेरा लास्ट 12 मंथ्स में 2,59,724 हुआ है, विच इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, विच इज रोलिंग 12 मंथ सेल्स. So this is not possible in traditional pivot tables. आप rolling 12 months कैसे calculate करोगे? Pivot tables में possible ही नहीं. So आपको DAX करना पड़ेगा. There are another all these measures which I have written in DAX, like let's say same period last year है, correct? So अभी इसमें क्या होगा कि मेरा सेम लास्ट ईयर में कैसा धंधा हो रहा था. देखो, तो जैन में मैंने 15,658 का सेल्स किया इन 2023, एंड 2024 में मेरा 20,000 हुआ, एंड लास्ट ईयर का मेरा 15,000 था. So now I can analyze this data better, like same period last year, rolling 12 months. I can use even the concept of year to date. As I told you कि year to date concepts होते हैं बहुत बार. So I'll remove all these measures which I have written and मैं year to date डालता हूँ. करेक्ट. सो नाउ दिस इज माई रोलिंग पीरियड कि मेरा रोलिंग ईयर टू डेट कैसे हो रहा है, लाइक हाउ माई डेटा इज फ्लोइंग ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस. सो ऑल दिस इज पॉसिबल. अभी ये सिर्फ मैंने बुक्स का लिखा है, करेक्ट. नाउ दिस इज मोर लाइक अ डैशबोर्ड, बिकॉज मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ बुक्स चूज की है. तो इफ आई चूज क्लोथिंग कैटेगरी, तो नाउ दिस इज क्लोथिंग कैटेगरी का पूरा डेटा. इफ आई यूज दिस ऑप्शन एंड आई चूज ऑल द कैटेगरीज, नाउ दिस इज माई एंटायर बिजनेस का डेटा, करेक्ट. नाउ आई एम लुकिंग एट लाइक द एंटायर बिजनेस लेवल, करेक्ट. सो इसका आप अगर टोटल देखोगे, सो इसका टोटल एंड दिस टोटल विल ऑल्सो मैच. So what I did was I used the concept of power pivot in Excel, DAX measures मैंने लिखे, and then pivot table with the help of data model. So when I created this pivot table, हम लोग छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं. देखो यहाँ पे there is something called as data model. तो ये data model से डेटा आ रहा है. This is not coming from a table or a range, because I am using the concept of power pivots in Excel.
तो ऐसे डैशबोर्ड्स बना सकते हो एंड ऐसे आप डेटा एनालिसिस भी एक्सेल में कर सकते हो. सो दिस इज द पावर ऑफ पावर पिवट इन एक्सेल. एंड जो जो भी आप ये डैक्स सीखोगे, this DAX will become your foundation when you build Power BI dashboards also, because Excel is not a tool which you can send it to the clients, because उसमें काफी filtering sorting करना पड़ता है. And I don't want like a CXO level person doing this. I used to work with CFOs when I was in EY. मेरे सारे मॉडल CFO को टीम्स को जाते थे. तो इफ आई गिव देम एन एक्सेल फाइल, इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव, खोलने में टाइम लगता है. तो व्हाट वी डू दिस डेज इज दैट हम लोग पावर बीआई में सारा डेटा भेजते हैं एक्सेल से, एंड उनको पावर बीआई का रिपोर्ट्स देते हैं. सो इट्स मोर इंट्यूटिव एंड मोर यूजर फ्रेंडली फॉर देम टू सी इट. सो वैसे आप कर सकते हो, वैसे आप डैशबोर्ड्स एक्सेल में भी बिल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया है. सो दीज आर सम ऑफ सम फीचर्स विच एग्जिस्ट इन एक्सेल यूनिवर्स, which is the concept of power pivot in Excel and power query in Excel. So this also exists in Excel. ये हम लोग को बहुत बार बताया नहीं होता है. Now after this, I would talk about some programming in Excel. So now what we learned, just to summarize, we started with the word spreadsheets. We learned dynamic arrays. We learned lambdas, XLOOKUPs, lot of new functions. फिर पावर क्वेरी सीखा, which is an ETL tool, extract, transform and load. Then we learned power pivot, which helps us analyze business data. Now हम लोग सीखेंगे VBA macros. एंड अभी VBA macros is also no longer like relevant because Excel ने और एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, which is called as office scripts. So बहुत बार people ask me this question कि यार चिन्मय ये VBA macros क्या होता है. तो I'll give you a very simple metaphor and analogy. VBA stands for Visual Basic for Application. So it's kind of a programming language which Microsoft has written, which works on its office products. ऐसा नहीं है कि VBA macros works only on Excel. It works on Outlook, it works on PPT, it works on Word as well. So it's a programming language. And macros is the output of that programming language. तो मैं एक मेटाफर दूंगा. बचपन में हम लोग ने सब लोग ने इंग्लिश सीखा. मैं आपसे इंग्लिश में वार्तालाप कर रहा हूँ. सो इंग्लिश जब हम लोग ने सीखा था, हम लोग ने क्या सीखा? ABCD सीखा, पंक्चुएशन मार्क सीखा, टेंस सीखा, ग्रामर सीखा. एंड देन वो सारा इंग्लिश सीख के हम लोग आज मैं स्पीच दे रहा हूँ. सो आउटपुट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पीच. मैं एग्जाम में आंसर लिख रहा हूँ. आउटपुट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एन आंसर. मैं एग्जाम में लिंक्डइन पे पोस्ट लिखता हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ. सो दैट इज एन आउटपुट. सो आई लर्न इंग्लिश and the output of that English is an exam answer, or like let's say you want to write love letter to someone, then love letter is also like an output of it. So similarly VBA macros क्या है? तो VBA is a programming language. VBA यूज करके आप एक ऑटोमेशन क्रिएट करते हो, उस ऑटोमेशन को हम लोग मैक्रोस कहते हैं. करेक्ट. अभी VBA सीखने की जरूरत है क्या? Now I come also from a commerce background, correct? I am not from an engineering background, but still I am able to write a lot of codes. I am able to solve my a lot of problems. पहले मैं Stack Overflow पे जाता था, GitHub पे जाता था. I used to get codes from there, then I used to edit it and do a lot of trial and error and get the output. But now today what I can do is I can do it with the help of Excel, AI, like either it's Copilot or it's Claude or it's ChatGPT. So I'll again show you one example which I've again इस सेशन के लिए मैंने बिल्ड किया है, वेयर वी विल क्रिएट अ इंडेक्स यूजिंग VBA macros. So let's try to pull out this particular file. So as you can see here in this particular file, मेरा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल बिजनेस डेटा है. एंड देन बेसिकली मुझे क्या करना है? मुझे एक इंडेक्स क्रिएट करना है. नाउ ये जो कोड है, जो मुझे इंडेक्स क्रिएट करना है, दिस कोड आपको काफी इंटिमिडेटिंग लगेगा, बट ट्रस्ट में अगर आप चैट जीपीटी खोल दोगे तो चैट जीपीटी आपको कोड लिख के दे देगा. सो लेट्स गो टू एक्सेल and just ask chat gpt, give me a VBA code, give me a VBA macro code that creates index in Excel, in an Excel file. Correct. So I just give a simple prompt to ChatGPT. Before the session, मैंने मेरा साइड बार हाइड कर दिया ताकि आपको मेरी हिस्ट्री नहीं दिखेगी. These are all some small tips I have to follow as a presenter. So you can see एक पूरा कोड ChatGPT ने लिख के दिया है. बट अभी ये कोड आपने लिखा है, करेक्ट. सो इट विल नॉट गिव अ वेरी फैंसी इंडेक्स. मतलब ये जो कोड है, आप भी लिखोगे, आप भी प्रॉम्प्ट डालोगे. तो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड फर्स्ट. तो मैं अभी एक्सेल में जाता हूँ. आई विल राइट Alt F11. करेक्ट. Alt F11 से क्या होता है? यू गो इनटू VBA एडिटर. नाउ दिस इज VBA macros एनवायरनमेंट. ये दिस वर्कबुक है. यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया एंड आई क्लिक ऑन F5. सो आई क्लिक ऑन हियर एंड आई क्लिक ऑन रन. तो ये मैंने कोड रन कर दिया. करेक्ट. अभी नाउ मेरा इंडेक्स क्रिएट हो गया, बट सी द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स विच दिस कोड हैज क्रिएटेड. करेक्ट. सो अभी आप चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट लिखोगे. So this is the index which has been created. Now it's not a very good looking index. मतलब काफी basic index है, इतना feel नहीं आ रहा है कि वो index है.
करेक्ट. सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर शीट. सो आई एम डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर शीट. एंड ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी के कोड से हम लोग ने जनरेट किया था, बट इट्स नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी विजुअल, लाइक विच आई कैन सेंड इट टू द क्लाइंट. सो अभी दिस इज वेयर योर प्रॉम्प्टिंग स्किल्स कम्स इन टू द पिक्चर. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने काफी बेसिक प्रॉम्प्ट लिखा है. बट येस्टरडे ओनली व्हेन आई वाज वर्किंग विद क्लॉड, लाइक मैंने और डिटेल में प्रॉम्प्ट्स देके एक और अच्छा कोड जनरेट किया था. सो दिस वाज द कोड व्हिच आई जनरेटेड यूजिंग क्लॉड. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. सो आई कॉपी दिस कोड. आपको क्या करना है, यू गो टू डेवलपर टैब एंड यू कैन गो टू विजुअल बेसिक, और द कीबोर्ड शॉर्टकट इज ऑल्ट एंड F11. तो आप ऑल्ट F11 प्रेस करो. नाउ दिस बिकम्स माय VBA मैक्रो एनवायरनमेंट. यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक ऑन इंसर्ट अ मॉड्यूल. सो यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया एंड नाउ आई एम पेस्टिंग द कोड हियर. सो आई हैव पेस्टेड अ कोड हियर. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस पर्टिकुलर कोड. Now you can see this code has run and see the index which it has created. This entire index created with the help of a code which I got from Claude AI. Correct? See, it gives me a name manager also, that sheets index 10 back to index sheet is linked to all sheets. So अभी मैंने ये देखो, ये कोड में मैंने क्या किया था, I gave a feature, like when I gave a prompt, I told him कि आप एक back to index का भी डाल दो. So मैं कोई भी sheet में हूँ तो I can just click on back to index and I can go to my index sheet. So ये सारी चीजें चैट जीपीटी के कोड में नहीं आई थी, बिकॉज आपने प्रॉम्प्ट ही वैसे नहीं लिखा था. तो ये सारी चीजें कि प्रॉम्प्ट भी कैसे लिखना है, आउटपुट भी कैसे जनरेट करवाना है, उसके लिए यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर फंडामेंटल. सो सी नाउ बैक टू इंडेक्स है, आई कैन गो बैक टू इंडेक्स. सी द क्वालिटी ऑफ आउटपुट विच दिस प्रॉम्प्ट हैज जनरेटेड विज जो चैट जीपीटी का था. करेक्ट. वाई आई कुड जनरेट ऑल दिस प्रॉम्प्ट्स, बिकॉज मुझे एज ए यूजर, as a person who has spent 5-6 years in the financial modeling industry in corporates MNCs, I know कि कैसे आपको लुक एंड फील देना चाहिए क्लाइंट्स को. आपको नेम मैनेजर का पॉपअप आ रहा था, रोज का काउंट आ रहा था, शीट्स का स्टेटस विजिबल हिडन है कि नहीं आ रहा था. सो ऑल दिस थिंग्स विच आई हैव डन विद द हेल्प ऑफ VBA मैक्रोस. बट जो कोड्स थे वो मैंने नहीं लिखे थे. those codes came from chat gpt or copilot or claude AI. So this is the concept of VBA macros in Excel, जिससे आप कोडिंग से आप काफी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज प्रोग्रामिंग इन एक्सेल. आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो एक्सेल में विद द हेल्प ऑफ VBAs एंड मैक्रोस. नाउ देयर इज वन मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एक्सेल विच इज कॉल्ड एज ऑफिस स्क्रिप्ट्स. अभी VBA मैक्रोस के लिमिटेशंस क्या है समझो. VBA मैक्रोस ओनली वर्क्स ऑन डेस्कटॉप एक्सेल. वो एक्सेल मोबाइल पे नहीं चलता, एक्सेल वेब पे नहीं चलता. एंड व्हेन यू सेव अ मैक्रो फाइल, वो आपको एक्सेल SM या फिर एक्सेल SB एक्सटेंशन से सेव करना पड़ता है. तो बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस में मैक्रो फाइल रहेगी तो वो ईमेल पे ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज मैक्रोज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो आपका अगर कोई भी मैक्रो अननेसेसरली रन हो गया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का IT सिस्टम कैन कम टू अ स्टॉप. सो देयरफॉर लॉट ऑफ सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन एडेड टू द VBA मैक्रोज फाइल्स. सो अगर आपको लेट्स से अगर आपको VBA मैक्रो से नहीं करना है, सो देयर इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एक्सेल. सो आप एक्सेल देखोगे क्लोजली तो डेवलपर टैब है. सो दिस डेवलपर टैब इज नथिंग बट VBA मैक्रोज इन एक्सेल. एंड एक ऑटोमेट टैब भी होता है. दिस ऑटोमेट टैब इज नथिंग बट दिस इज ऑफिस स्क्रिप्ट्स इन एक्सेल. अगर आपको ये सारी चीजें एक्टिवेट करनी है तो यू गो टू फाइल, यू गो टू ऑप्शंस, एंड देन यू गो टू दिस ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज कस्टमाइज रिबन. जो आप जब कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे तब you have all these options. See, you have automate, you have developer tab. So all these things are like programming languages in Excel. So यहाँ से आप ये सारी चीजें एक्टिवेट कर सकते हो. So again, मैंने ऑफिस स्क्रिप्ट्स के लिए काफी अच्छा एग्जांपल सेट किया है. तो आई विल काइंड ऑफ ओपन माय ऑफिस स्क्रिप्ट्स, फिर आई विल टॉक अबाउट पाइथन इन एक्सेल, एंड देन मे बी वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर Q&A एंड डाउट्स अगर आपको कुछ भी होंगे. So now again I was helping some of my friends. मुझे उनका फोन आया था and they said कि यार चिन्मय, we had these data sets जहाँ पे हम लोग ने ERP से कुछ डेटा एक्सपोर्ट किया, but because of some issue like revenues सारे निगेटिव आ गए and सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था वो सारा पॉजिटिव में आ गया. So this is the problem statement we are facing. तो how you can reverse it? So as you can see यहाँ पे revenue के numbers सारे negative में आ गए and COGS सारे positive में आ गए. So it happens like many a times accounting softwares have a glitch, or the way you look at data, like जो bank reconciliation statement हम लोग करते थे, like your debit is my credit and your credit is my debit. So because of which ये problem statement हो गया. Now we want to convert all our negative numbers to positive and positive numbers to negative. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है, इजी नहीं है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आप ऐसे नहीं कर सकते कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज बीच बीच में फॉर्मूलाज है. तो फॉर्मूलाज को आपको छेड़ना नहीं है, बिकॉज इफ यू डू फॉर्मूला इंटू -1 तो वो बेस नंबर अगर चेंज होता है तो फॉर्मूलाज भी उल्टा चेंज हो जाएगा.
सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मैंने सोचा ठीक है VBA मैक्रो से कर ही सकते हैं, लेट्स कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने ऑफिस स्क्रिप्ट से किया। सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज दैट आई सिलेक्ट माई एंटायर डेटा, आई गो टू ऑटोमेट, करेक्ट, आई गो टू ऑटोमेट एंड यहाँ पे मैं व्यू स्क्रिप्ट्स करता हूँ एंड रिसेंट स्क्रिप्ट्स करता हूँ। नाउ दिस इज नॉट VBA मैक्रोस, दिस इज नॉट पावर क्वेरी, दिस इज नॉट पावर पिवट डैक्स। ये पूरा जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, दिस इज टाइप स्क्रिप्ट, दिस इज ऑफिस स्क्रिप्ट्स इन एक्सेल। दिस इज द कोड विच आई हैव रिटन, अगेन मैंने नहीं लिखा है, इट इज रिटन बाय क्लॉड AI, करेक्ट। सो आई गो बैक स्पेस and I can just kind of run this particular code. So moment I run this, now you can see my all my जो negative numbers थे they have become positive and जो मेरे costs थे all those costs have become negative and my problem statement has been particular solved. So ये जो मैंने code लिखा है, this is a TypeScript formula, this I have not written, this is written by Claude AI, but I have used the concept of office scripts to solve a real life business problem. So there are two programming languages which exist in Excel universe. One is the concept of VBA macros, which is slightly getting outdated, and new office scripts, which is a JavaScript TypeScript based language. Office scripts का क्या advantage है? It works on your mobile phone and it works on Excel for web also. So this is the concept of office scripts in Excel. Now there is one programming language which is called as Python in Excel. Now Python has been fully integrated into Excel. So अभी आप क्या कर सकते हो, आप Excel खोलोगे, I'll show you my file. So वहां पे मेरे Excel में अभी भी आप Python लिख सकते हैं. So this is the file which I have opened. And let me just open a new sheet. I go to formulas tab and you can see there is something called as insert Python. So कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ is equal to py टाइप करना है and tab hit करना है. Now this is a Python cell. Excel है but this has become a Python cell. यहाँ पे मैं literally Python codes लिख सकता हूँ and I can get the output which a Python programming language can fetch me. So this concept is called as Python in Excel. So I'll give you an example. यहाँ पे मैंने क्या किया है, पाइथन एंड एक्सेल का एक यूज केस कैसे बिल्ड किया है. सो दिस इज मेरे जो डेटा था, दिस इज अ मेसी डेटा, लाइक अनक्लीन डेटा सेट्स मैंने जनरेट किए हैं, विच इज एज यू कैन सी यहाँ पे काफी इश्यूज आ गए हैं. लाइक फॉर एग्जांपल समवन हैज टाइप 4th April 2024, समवन हैज टाइप विद अ कॉमा, समवन हैज टाइप 4th March 2021, किसी ने स्लैश यूज किया है, किसी ने हाइफन यूज किया है, किसी ने स्पेसेस डाल दिया. यू कैन सी देयर आर सम एक्स्ट्रा स्पेसेस हियर. सो ऑल दिस इज माय मेसी डेटा विच इज माय अनक्लीन डेटा. नाउ आई वांट टू क्लीन दिस डेटा. सो अभी मैं एक्सेल में क्लीन करूंगा तो मैं इफ लगाऊंगा, फाइंड लगाऊंगा, लैम्बडा लगाऊंगा, विच विल बिकम अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टास्क, करेक्ट. ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन यूज पाइथन इन एक्सेल. अभी पाइथन का एडवांटेज क्या है कि पाइथन में लाइब्रेरीज होती है, करेक्ट. सो लाइब्रेरीज काफी लोग दे स्पेंड ईयर्स, दे डेवलप अ लाइब्रेरी एंड वो एक रेडीमेड ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाता है. तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट लाइब्रेरी टू गेट योर जॉब डन. सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइप इज इक्वल टू py. Now this becomes a Python in Excel cell. Like, this is a Python cell. I can type Python here. So I can say pd dot, to date type. So this is the Python code which I have written here. So you just type is equal to py. You can say pd dot to date time. And you just have to refer to this particular cell. And then just press Control and enter. So this is यहाँ पे शायद 2 के बाद अंडरस्कोर देना पड़ता है. And then what it does, it runs a Python code and it gives me the output, correct. So depending on your subscription, it kind of gives you, like if you are not using an enterprise version तो थोड़ा lag होता है. But this is pd.todate type. ये Python code pandas library से मैंने उठा के मेरे Excel में जो 100 dates थे which were unclean dates. How can I clean these dates in Excel? Possibly नहीं. So I've used Python in Excel to kind of clean these dates. Correct. So this is the concept of Python in Excel, is that now you can use entire programming Python. देखो यहाँ पे insert Python करना है, and then you can just write some Python codes within Excel. Correct. So that has also been integrated into Excel. And how do I know about these updates? Like, मतलब a lot of people ask me कि Chinmaya, how do you know about this? So इसका बहुत अच्छा hack है, which is that you follow the product managers from Microsoft. So I would again show आपको like what you should be doing is that many a times go to LinkedIn and follow the right people from product. अभी केयूर पटेल करके है, correct. So केयूर पटेल is from Microsoft, correct. He is a product manager in Microsoft. So what you should be doing is that you should be following people like him, correct. So अभी वो 10 साल से Microsoft में काम कर रहे हैं, correct. He is a program manager there. So you should follow him on LinkedIn, correct. A lot of people we use flash fill in Excel, correct.
So now this person, his name is Sumit Gulwan. Correct, this person. So he is also, now if you see his background, he is an Indian, like he is from IIT. So वो गए थे मतलब he did it IIT कानपुर, then Berkeley से उन्होंने PhD किया है, and he's a vice president since 20 years in Microsoft. And वो LinkedIn पे एक्टिव है, like he writes blogs. So he is the inventor of flash fill. आप इनके बायो में जाओगे तो he has written that he is inventor of flash fill in Excel. So जो फर्स्ट मशीन लर्निंग टूल आया था एक्सेल में, which is the concept of flash fill, ये इन्होंने इन्वेंट किया था. Correct. So these are the type of people you should be following. Abhi Catherine hai. Like she's a head of product at Excel. So she continuously keeps on blogging about any new feature which comes into Excel. She kinds of, blogs about it. So these are the kind of people like, Catherine, Keur Patel, Joe Mugday. These are the type of people that you should be following on LinkedIn. Correct. Like अभी आपको मैं पूछूं इंडिया के मुझे 10-20 क्रिकेट प्लेयर्स बता दो, आप मुझे 50 बता दोगे लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1975. बट इफ आई आस्क यू कैन यू टेल मी 5 प्रोडक्ट मैनेजर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एंड देन काफी लोग आप आंसर नहीं बता पाओगे. व्हाई? बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग इकोसिस्टम. ऐसा नहीं कि क्रिकेट बॉलीवुड सिनेमा नहीं देखना चाहिए, आप देखो, नो डाउट अबाउट इट, बट इन लोग को भी स्टार्ट करो फॉलो करना, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. Product managers who have spent 15-20 years on Excel, they can directly teach you. So again, coming to the gamut of Excel universe, तो काफी कुछ ग्राउंड हम लोग ने कवर कर लिया है. Now the last, so we discussed programming in Excel, VBA macros and office scripts, and हम लोग ने Python in Excel भी सीखा. अभी AI in Excel के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, and then we will open the floor for Q&A. And before I jump into AI in Excel, मैं थोड़ा आपको collaboration, integration and Excel के updates के बारे में बता देता हूँ. Now whenever I ask people कि यार कौन सा iPhone यूज कर रहे हो, they are like कि हाँ iPhone 16 है, iPhone 17 है, like बहुत मतलब इमीडिएटली आंसर दे देते हैं. एंड मैं उनको पूछता हूँ कि एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, दे आर लाइक कि एक्सेल का भी वर्जन होता है क्या. सो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सेल में भी वर्जन होते हैं. करेक्ट. दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री टू शो यू द द गैमूट ऑफ एक्सेल यूनिवर्स की हाउ हैज एक्सेल आल्सो इवॉल्व. सो एक्सेल आल्सो वर्क्स ऑन वर्जन्स, एंड राइट वर्जन ऑफ एक्सेल होना भी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउ डज एक्सेल वर्जन्स ऑपरेट. सो एक्सेल के स्टैटिक वर्जन्स आते हैं. वन इज लाइक अ वन टाइम वर्जन कि आप एक बार माइक्रोसॉफ्ट को पैसे दे दो, एंड देन यू हैव लाइफ टाइम एक्सेस. Excel 2013, Excel 2019, Excel 2024, these are static versions in Excel. And then there is a dynamic version in Excel which gives you updates every month or every quarter, which is called as Microsoft 365 or Office 365. So अगर आप Office 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हो, so let's just go type Microsoft 365. And then what you can do is यहाँ पे मैं buy का भी लिख देता हूँ, buy. So you can buy the subscription also. So now subscriptions में भी काफी varieties आती है. Correct. So this is a family subscription. So अभी आप family subscription लेते हो Microsoft 365 का, तो it costs you about what 8,200 per year including GST. And it gives you 6 TB of cloud storage. हमेशा सब लोग यही पूछते हैं, फैमिली अगर आप प्लान लोगे तो 6 people can use it. Correct. So see it works on like 5 different users. So total 6 लोग ये यूज कर पाएंगे. See, फॉर 1 to 6 people. तो अगर आप एक ग्रुप बनाते हो 6 लोगों का, या आपके फैमिली में लेते हो, दोस्तों के ग्रुप में लेते हो, तो आपको 8,000 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1,500 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा साल का. 1,500 रुपए साल का मतलब दिन का आपको कितना, मतलब 300 डेज, तो 3-4 रुपीज अ डे. सो वॉट एवर ब्रेक्स यू माइट बी टेकिंग, चाय सुट्टा ब्रेक्स, उसमें आप जितना पैसा खर्च करते हो उसके कम पैसों में, 3-4 रुपीज में आपको माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस मिल सकता है. सो ट्राई टू डाउनलोड द लेटेस्ट टूल्स इन एक्सेल. यहाँ पे कंजूसी मत करना, राइट. ऑलवेज हैव द बेस्ट एंड द मोस्ट अपडेटेड टूल्स. एंड अगर आप ऑफिस में यूज करते हो तो आपको स्ट्रेस ही नहीं है, आपको 365 का एंटरप्राइज लाइसेंस भी मिल जाएगा. सो स्टैटिक वर्जन होते हैं, डायनेमिक वर्जन होते हैं. ऑलवेज गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365. एंड ट्रस्ट मी, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट पेइंग मी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, बट एवरीवन यूजेस इट. सो वी शुड हैव द लेटेस्ट टूल एंड द मोस्ट अपडेटेड टूल. मतलब आज अगर लड़ाई करनी है तो मैं तलवार लेके नहीं जाऊंगा, मैं AK-47 लेके जाऊंगा. करेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट्स द टेक्नोलॉजी हैज अपग्रेडेड. इफ आई गो टू अ gunfight with a sword, then I have already lost the battle. If you don't have the latest version of Excel with you, then you're already way behind. आप Python in Excel नहीं use कर पाओगे. This is only available in Office 365. Correct. So what you should do is you should go to your Excel. यहाँ पे आप फाइल में जाओ, then account में जाओ, and account में you go on about Excel. तो अब अबाउट एक्सेल में गए तो यहाँ पे आपको वर्जन पता चलता है. तो यू कैन सी आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ही.
सो दिस इज वन थिंग. देयर आर इवन स्मॉल थिंग्स. यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर चैनल है, तो आई कैन चेंज माई चैनल ऑल्सो. तो यहाँ पे मैंने चैनल पे क्लिक किया. दिस फीचर इज रेस्ट्रिक्टेड इन ऑफिस लैपटॉप्स. नाउ यू कैन सी देयर इज अ करंट चैनल एंड देयर इज अ बीटा चैनल. सो इफ आई इंस्टॉल बीटा चैनल, देन जो भी एक्सेल के सारे अपडेट्स आते हैं, फीचर्स आते हैं, वो पहले मुझे मिलेंगे एंड देन वो करंट चैनल में आएंगे. तो आई हैव अ फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. लाइक आई कैन यूज दोज फीचर्स. लाइक लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस न्यू फीचर्स. अभी उन्होंने को पायलट फंक्शन लॉन्च कर दिया है विच इज नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिशनल एक्सेल, करेक्ट? But if I go in the insiders channel, if I go in the beta channel, if I change my channel, if I go in my beta channel, then I can use copilot function. So whenever they release a function, 6 महीना टेस्टिंग फेज में होता है, वो बीटा चैनल में जाता है, उसके बाद वो करंट चैनल में आता है. तो इफ यू वांट अ फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, आप बीटा चैनल ऑन करके आप वहां पे कर सकते हो. So that is the concept of like channels or updates in Excel. So that is a brief history about versions in Excel जो बता होना चाहिए. अभी then and again like Microsoft keeps on rolling out new features. For example अभी आप व्यू में जाओ, यहाँ पे मैं फोकस सेल पे क्लिक करता हूँ. सो यू कैन सी मैं जब भी मैं शीट चेंज करता हूँ, मेरा फोकस सेल आ रहा है, कौन से सेल में मैं काम कर रहा हूँ, इट इज बीइंग पॉपुलेटेड. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल. लाइक अभी हम लोग इंडेक्स करते हैं, तो लेट्स से आई गो टू रिव्यू टैब एंड आई क्लिक ऑन नेविगेशन. सो यहाँ पे एक पूरा इंडेक्स क्रिएट हो जाता है. अब ये नेविगेशन टूल जो है, दिस इज नॉट अवेलेबल इन ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल. दिस इज अवेलेबल इन ऑफिस 365. तो आप अपडेट्स करते रहोगे तो ये स्मॉल स्मॉल फीचर्स आपको, नए नए फीचर्स आपको मिलेंगे, करेक्ट? कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट? लाइक लेट्स से आई टाइप 2 + 2 4. अभी ये मुझे वैल्यू पेस्ट करना है. सो द ट्रेडिशनल कीबोर्ड शॉर्टकट इज ऑल्ट एस वी और कंट्रोल ऑल्ट वी, बट माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड अ न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज कंट्रोल शिफ्ट एंड वी. सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट वी करो तो आपका वैल्यू पेस्ट हो जाएगा डेटा. सो ऑल दीज न्यू फीचर्स वुड बी अवेलेबल इफ यू आर ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफिस 365. Cool. Now let's end this session. I'll talk 5-10 minutes about updates in AI in Excel, and then we can open to Q&A. So yesterday I was very excited, like when I kind of एक्सप्लोर, बिकॉज कल मैंने क्लॉड का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था. सो व्हाट्स द एआई इन एक्सेल, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो एज यू कैन सी ऑन माई एक्सेल, यहाँ पे को पायलट भी है, यहाँ पे एक्सेल लैब्स भी है, यहाँ पे क्लॉड भी है, यहाँ पे चैट जीपीटी फॉर एक्सेल भी है. तो सारे एआई टूल सभी एक्सेल में इंटीग्रेटेड हो गए हैं. सो व्हाट इज को पायलट? को पायलट इज नथिंग बट इट्स एल एल, मतलब इट्स अ टूल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट? सो ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है. चैट जीपीटी जो है, दिस इज अ टूल बाय ओपन एआई. सो ये ओपन एआई का टूल है. एंड जो क्लॉड आप देख रहे हो, दिस इज एन एंथ्रोपिक करके एक कंपनी है. उनका एक मॉडल है. एंड हर एक के अलग अलग मॉडल है. एंथ्रोपिक का शायद ओपस मॉडल होता है, सो इट वर्क्स ऑन ओपस. माइक्रोसॉफ्ट शायद चैट मतलब ओपन एआई की एलएलएम्स यूज करता है. सो दीज आर लाइक गैमुट ऑफ टूल्स एंड एवरीथिंग हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू एक्सेल. अगर आपको एक्सेल में डालना है तो आप एडेंस में क्लिक करो. यहाँ पे मोमेंट यू क्लिक ऑन एड-इन्स, दिस इज लाइक अ प्ले स्टोर. जैसे देखो अपना ऐप स्टोर होता है या फिर प्ले स्टोर होता है इसमें मोबाइल फोन्स में. दिस इज एन ऐप स्टोर और एन एड-इन स्टोर वेर यू कैन डाउनलोड एड-इन्स इन एक्सेल. सो दिस इज अ वर्क प्लेस क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. आप एड-इन्स बना के आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो. इफ यू हैव द परमिशंस राइट, देन यू कैन कीप इट फॉर फ्री और यू कैन इवन लाइक चार्ज द मनी एंड डू इट. सो यहाँ पे आप चैट जीपीटी सर्च करो. सो यहाँ पे देखो चैट जीपीटी फॉर एक्सेल का एक एड-इन है, करेक्ट? सो यू कैन यूज दैट एड-इन. देन अगर आप क्लॉड सर्च करते हो, क्लॉड सर्च करते हो, तो ये क्लॉड इन एक्सेल का नया एड-इन है, क्लॉड बाय एंथ्रोपिक एक्सेल. सो ये एड-इन यहाँ पे है. सो ऑल दीज इंटीग्रेशंस आर इजीली पॉसिबल. एंड इसमें एक्चुअली कोई ज्यादा सिखाने जैसा है नहीं. मतलब लाइक लेट्स से दिस इज माय डेटा. Let me just open Copilot, and then I can just ask it summarize this data. I can just ask it summarize this data and give me department or designation wise salary numbers. So बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है. वी कैन इम्प्रूव द प्रॉम्प्ट ऑल्सो, बट लेट्स ट्राई टू सी कि अभी हम लोग पिवट टेबल्स, काउंटर्स, समएफ्स ये सब सीखते थे एक्सेल में. इज दैट relevant, or is Copilot able to handle such queries? So let's try to see that. So uh, cool. So I think it's working. So let's try to see what quality of prompt it is giving us. So this is how you can use AI within Excel. एक co-pilot chat होता है. So co-pilot chat में आप यूज कर सकते हो. And then you can use functions also. जो मैंने ये chat GPT for Excel डाला है,
इसमें मुझे AI बेस्ड फंक्शंस आ गए एक्सेल में. सो लेट्स नॉट रश, लेट्स ट्राई टू सी इफ इट्स एबल टू give the answer. Many a times this AI, like it hallucinates, gives wrong answers. Sometimes it takes a lot of time. And I mean, I feel that you should use AI only for cases where you have probabilistic need. अगर deterministic है कोई problem statement, तो what is probability, what is deterministic, वो आपको समझेगा, as you progress in the course or as you spend more time, so you will learn all these things. But deterministic cases में it's best that you use Excel or traditional tools like Python only. And probabilistic cases हो गए, in those situations, you should be like kind of using this. So let me just pull out that particular example first. So अभी देखो, ये मैंने आप एनालिस्ट हो, आप ये कॉल ट्रांसेप्ट का डेटा लिया है, एंड अभी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, लाइक लेट्स से योर बॉस आस्क कि यार किन किन लोगों ने कॉल अटेंड किया था, ये मुझे बताओ, रिपोर्ट करो, करेक्ट, मुझे शायद सेबी को भेजना है फॉर सम कंप्लायंस रीजन. नाउ नाउ इफ यू ट्राई टू गेट डेटा फ्रॉम हियर, इट्स इम्पॉसिबल कि आप ये कोई लेफ्ट लैम्बडा कोई भी फंक्शन यूज कर लो, ये आपको डेटा एक्सट्रैक्ट नाम एक्सट्रैक्ट करके ही नहीं देगा. दिस इज अ जनरेटिव AI कैपेबिलिटी ओनली. So what I have done is that I have AI.extract. Now this is a ChatGPT function. ये मैंने ChatGPT for Excel डाला है. So I have to give it a value, and then like maybe I have to give it a prompt, give me the names. So let's see if it works or not. So it is showing a busy, and see it has now given Chinmaya and Mr. Amte. Now again, this is not a very good way. So give me the names in one single cell, and keep it first name only. Correct. So now I have given it more detailed prompt. So you can see now it has extracted Chinmay from there. Now these things are something which Excel cannot do. Correct. These are the things which only ChatGPT or LLMs can only solve. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हमें सीधे साधे अक्षय. Correct. Now it is still able to extract that Akshay was there in this particular call transcript. So these are the problem statements where you can use AI. Correct. Now, like let's say we put this video on YouTube and let's say you show us a lot of love and you give us a lot of comments. Now Sanjay sir wants to analyze कि ये चिन्मय का webinar हो गया है, लोगों का क्या कहना है, is it a positive thing or not a negative thing. So what you can do is he can use again this, like उनको डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया उनके यूट्यूब टीम ने, उनको एक्सेल में दे दिया. नाउ अगेन ही कैन डू ओपन चैट जीपीटी, पुट इट देयर, बट ही कैन just use this AI dot ask function, where he can just give it a prompt, summarize this as positive or negative, and he can just give it a range also. Correct. So now this basically tutorial, this is a felt more like a lecture than a YouTube tutorial. Sorry. So this is a negative comment. So I am using an AI function. So AI.ask क्या करता है? It goes, takes the prompt, runs on an LLM, which is a ChatGPT का LLM, and then it gives us the answer back in Excel. So this is how you can use AI within Excel also, ChatGPT के through. क्लॉड का भी एड इन आ गया है. सो यू कैन गो, क्लॉड का एड इन इज अ पेड एड इन, यू हैव टू स्पेंड 2000 रुपीज पर मंथ टू गेट एक्सेस टू दिस एड इन. बट इवन दिस एड इन डज अ फैंटास्टिक जॉब. मतलब आई विल शो यू. मैंने एक कल मॉडल पूरा बनवाया. सो व्हेन आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग फॉर दिस वेबिनार, सो आई वाज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल, एंड मुझे एक पूरा दिस जोमेटो क्लॉड का ये जो मेरा फाइल है, दिस इज कंप्लीटली बिल्ड बाय क्लॉड. मतलब मैंने सिर्फ 10 मिनट प्रॉम्प्ट दिया है, and this entire financial model, 3 statement financial model with charts, has been built by Claude, and ये सारा data भी Claude ने लिया है. So this is entirely built by Claude. So this is also अभी जो basic काम था, assumptions लाना, charts बनाना, lot of these things can be done by AI tools as well. So this entire model has been built by Claude. I have not verified it, कितने नंबर सही है, कितने मिस्टेक्स है, कितने स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है, but you can give a lot of tasks to Claude, and Claude is doing a fantastic job in terms of generating some outputs also. Like even if you want to make a PPT. So for example, abhi yesterday when I was planning about this particular session, so I was going to present you some more case studies which we will be discussing in the analyst tech program. तो ये जो PPT है ये पूरा क्लॉड ने बनाया है. I have not made this PPT. So this is a case study which we discuss in the analyst tech program, where I ask you to build a Nifty 50 ka dashboard. So this PPT has been generated by Claude. Now, again, this is a case study which we will be discussing in analyst tech program, where I will be talking about building splitwise in Excel.
Correct. So all these PPTs have been generated by Claude. So Claude is absolutely very powerful in terms of generating models, generating PPT, and it does a fantastic job. So with this, I'll just stop sharing my screen and we can open the floor for Q&A. So just to summarize in 1 minute, because YouTube Shorts ka jamana hai, we started with the right word spreadsheets. Then we understood Excel, Google Sheets, Kings of China, different spreadsheet tools. Then I talked about like basics of Excel and advanced Excel functions like XLOOKUP, filter, Lambda. Then we talked about the concept of dynamic arrays in Excel. Then we talked about VBA macros in Excel. I talked about Office scripts in Excel, which are the two programming languages. Then I talked about Power Query in Excel, which is based on M language, which is an ETL tool. Then we talked about Power Pivot in Excel, which helps you analyze business data. Then we talked about Python in Excel. And then in the end, we also talked about the versions of Excel, like Microsoft 365, Office 2019, new features which come with Office 365 updates, the beta channel. And in the end, I talked about the three AI tools, which is Copilot, ChatGPT, and the Claude का OpenAI Copilot का it was taking some time to process the data happens like AI के साथ. So this is the entire gamut of Excel, and it has taken me a lot of years. मतलब 5 6 7 सालों से मैं ये Excel evolve हो रहा है and I've closely watched it. I've also told you some people whom you can follow. When it comes to Excel, मैं आपको और एक चीज बता के I'll end this particular session. So एक चीज होती है कि जहाँ पे Excel भी एक competition हो गया है. So I'll just show you my screen. Where is my browser? Cool. So there is something called as Financial Modeling World Cup. So Excel is now an official sport, and it is live stream on ESPN. So देखो ये live finals हो रहे हैं. So this is kind of live stream on ESPN, and यहाँ पे लोग आके Excel के problem statement solve करते हैं. Correct. So it's called as Microsoft Excel World Championships. So what it does is that this is live stream on ESPN. People they participate from various countries, and जो finals में जाते हैं, so they go to Las Vegas and वहाँ पे they kind of participate. So see, this is happening in Las Vegas. Mics जाके उनको पूछ रहे हैं. People are also watching. So this is a financial modeling World Cup which happens every year. मैंने भी participate किया था. I think I had come all India rank 6, but rank one from each country goes to Las Vegas, fully sponsored trip by Microsoft. And you can go to if I go to Las Vegas, मैं तो Excel competition नहीं attend करूंगा, but still you have a full opportunity to go to Las Vegas and participate in this financial modeling World Cup, and it is live stream on ESPN. आज का आप क्रिकेट मैच देखोगे 7 7:30 बजे. I don't know, I don't watch cricket a lot, but you can watch Microsoft Excel World Championship also, which is live stream on ESPN. So अगले साल होगा. So ये सारी चीजें भी अपडेट्स भी Excel में आ गई है. So with that I would conclude. Over to Sanjay sir, and if we want to do a Q&A, we can do that as well. So participants, it's really a hell of a task in uh, displaying all the knowledge that you have within a span of 60 70 minutes. बहुत टाइम माने बहुत एफर्ट लग जाता है, प्लस एट द सेम टाइम इंटरैक्टिव नहीं है, तो ये भी समझ समझ में आता है कि अगले को कैसा लग रहा है. तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील इट. सो माने हैट्स ऑफ टू यू, यू मेंटेन द एनर्जी वेल. And please understand, Chinmay went on saying that I was talking about it. He was not teaching anything. It was talking going on. There was no teaching involved. तो किसी को भी ऐसा लगा ना, यार कुछ समझा रहा तो है ही नहीं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके कैसे हो सकता है. अगर पूरा का पूरा एक दर्शन देना है सारे के पूरे यूनिवर्स का इन एक्सेल, तो इन दैट केस द टीचिंग पार्ट कैन नॉट हैपन. बट यू कैन अंडरस्टैंड उसका आर्टिकुलेशन हिंदी इंग्लिश सच दैट मतलब वो एकदम फाइन ट्यून्ड होगा when it is in analyst stack and contextually for the purpose of investment banking, consultancy, okay, investment management, buy side, sell side, उस purpose के लिए. Chinmay, there are things that they're done in different fields, and Excel cannot be removed. For example, if there's a cricket coach, okay, because आज cricket match है, and he is thinking that जो next series है उसके लिए कौन कौन से बैट्समैन को ले, ठीक है, so they get the runs scored by the particular player in the past matches. और उसके बाद जाके वो जिस तरह से बड़े हम लोग बैंक में बोलते हैं टाइम टू डिफॉल्ट मॉडल होता है कि कब डिफॉल्ट होगा पहला, तो अकॉर्डिंगली वो प्लेयर का समझ में आ सकता है कि उसका क्या फ्रीक्वेंसी से वो खराब खेलता है अच्छा खेलता है. दोज फेजिंग आउट्स कैन बी डन
And but the point is that it's coming with the help of Excel and of course with the help of the application that the person knows the coach क्या करना है. ठीक है. Today is also the Women's Day. So happy Women's Day to all the wonderful women and girls who are attending this particular session and who would be watching it on YouTube later on. I have always felt that finance industry में पता नहीं क्यों the upbringing of the people is such that females को ऐसा लगता है कई बार कि नहीं नहीं हम लोग इतने अग्रेसिव नहीं है, जो कि फाइनेंस में बहुत अग्रेशन चाहिए, फाइनेंस में बहुत पेशेंस चाहिए एंड यू ऑल आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू पेशेंस एंड calmness. ठीक है. So I we just forgot to wish happy Women's Day to all the participants, the female participants who are there. And we are looking So just forward. one point on this. Just one So second. Chinmay may not be interested in cricket, but I am तो damn interested. अभी मेरी क्लास जो है 12 बजे से थी. मैंने मैसेज किया 12:10 से. क्यों? बिकॉज मेरे को रात को क्लास लेनी नहीं है. आई हैव टू सिट फॉर द मैच. सो दैट्स द वे इट इज. एंड ऑफ कोर्स शुभकांत जी, अब जो डाउट्स है ना, जैसे शुभकांत इज ब्रिलियंट इन दिस टर्म्स. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. He summarizes the doubts wonderfully. He will summarize the doubt for you and then you can think and assess the and take the answer. मैं अपने क्लास की तरफ जा रहा हूँ. आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई क्लास. yeah, वरना मेरे को sure. 12:10 का 12:20 करना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू टीच इन द इवनिंग व्हिच आई विल नॉट डू एट ऑल. ठीक है. क्रिकेट रोम Yeah, रोम में sure, बसा sir. हुआ है. ओके. बट Yeah, sure, वंडरफुल sir. सेशन में. ओके. आई हैव फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग. लोग बोलते हैं आप यूट्यूब में देखे नहीं है क्या? मैं नहीं देखता हूँ. आई डोंट सी. मतलब आई डोंट फॉलो. ठीक है. आई मेंटेन. मतलब कितना नॉइज से अफेक्टेड हो. You have to somewhere call it this thing. Okay, you were saying something, just completed and then Yeah, so sure sir. So I just wanted to complete. So today's Women's Day also. So YouTube में जो सबसे मतलब एक्सेल का एक यूनिवर्स है, उसमें जो सबसे बड़ा YouTube चैनल है, that is by लीला घरानी. तो like she has the largest subscribers in Excel universe, and she happens to be a woman. So like a lot of women in Excel are also there. Of course, majority of the people are men, but there are some outliers also in this data. sure, sure. Shubhkan ji, it's all over to you. Yes, sir. Thank you, sir. So basically, the questions are, I think people were very interested, Chinmay. Like, will we be sharing this Excel which you were, presenting in our webinar? So they're interested, like whether we'll be sharing this Excel. And basically, the question is, since you are explaining this very nicely, especially in terms of, how the Excel has evolved or spreadsheet has evolved over the years, right? So basically, the question is like, would you recommend or is Excel suitable on Mac OS if somebody is trying to use it for on a long-term basis? So what would be your recommendation? And the other part is that in our analyst stack program, somebody who is, just starting in Excel. So will he or she be able to cope up with the analyst stack, the curriculum of the Excel that we are taking in our learning module 1? Yeah, sure. So, first of all, like when we put this video on YouTube, I would attach some resources in the description box. So, in case you want to access those resources, then you can access through them. Also, you can like reach out to me if you have any more doubts or any further queries. More than happy to answer your questions as well. Now coming to the point whether you should be using Mac OS or you should be using Excel for Windows. My recommendation would be that आप Excel for Windows ही use करो because at the end of the day you would work for some MNC or you would do some job, correct? So जब आप जाओगे MNC में तो everyone uses Windows. So it's better that you start working Excel for Windows. There are a lot of features in Excel for Windows, like let's say VBA add-ins होते हैं. तो बहुत बार जो एड होते हैं वो मैक में नहीं मिलते आपको बिकॉज इतना बड़ा मार्केट नहीं होता है तो डेवलपर मैक के लिए स्पेशल एड नहीं बनाते. लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स इन पावर क्वेरी ऑल्सो दे वर्क बेटर ऑन एक्सेल फॉर विंडोज, नॉट सो गुड ऑन मैक ओएस. सो अगर आपको फाइनेंस में करियर करना है एंड इफ यू लाइक आर थिंकिंग कि आपको जॉब भी करना पड़ेगा इन फ्यूचर, देन आई थिंक एक्सेल फॉर विंडोज इज द बेस्ट वे टू डू इट. मैक में आपको सारे काफी रेस्ट्रिक्शंस एंड काफी लाइक हिंड्रेंसेस आएंगे. इट्स अ वेरी गुड टूल. 90-95% are like similar things only, but for a elegant smooth experience, I think Excel for Windows is better because a lot of add-ins and a lot of integrations, because like Excel is a Microsoft product, Windows भी Microsoft का है. Integration wise it's better, like integration with SharePoint, integration with OneDrive. So I use Windows का laptop and I would recommend Excel for Windows. In terms of analyst stack program, so I think the curriculum जो brochure है उसमें हम लोग ने डिटेल में दिया है. When I teach assuming कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है. So I start from very basic scratch.
and then I escalate things, and then we go at a very deep level as well. So even if you are someone who is new towards Excel and he wants to join, then he can join. All I expect कि आपने एक 5-10 घंटे Excel पे spend किए होगे, बेसिक सम फंक्शन बता होगा, बेसिक पिवट टेबल्स बता होगा, बेसिक काउंटिव बता होगा. Although in the first 2 sessions I cover the basics and then I go on advanced topics. But अगर थोड़ा बहुत Excel का background होगा तो it will help. नहीं होगा, that is also fine. Because initial 2 sessions are kind of basics of Excel only. And since we are also recording the program, so if you are stuck, so all you have to do is rewatch it again. ऐसा नहीं होगा कि आपको चीजें समझेंगे नहीं when I teach. आपको चीजें समझेंगी. It's just that you may have to watch it again. So that is my answer to those questions. Yeah, thank you. Yeah, so I think that is what the essence of this all the questions that were coming in. So I think it's good time to close out. So as we close today's session, thank you all for your active participation and valuable time. We truly hope this webinar on Mastering Excel, the Future of Finance, has given you meaningful insights and practical takeaways. So on behalf of SSCI, we extend our sincere thanks to Sanjay sir and Chinmay Amte for sharing the expertise, and to all of you for being such an engaged audience. And we look forward to welcoming you again in our future sessions. Thank you. Thank you all.